हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो अभी हम जा रहे हैं बजाज पल्सर शोरूम टू चेक आउट द न्यू डोमिनार 250। देखने जा रहे हैं एंड लेटर आई विल मेक अ डिटेल्ड रिव्यू अबाउट द बाइक। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो डायरेक्टली वहाँ पर मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो हे दे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं कोंडापुर के शोरूम में हूँ, बजाज शोरूम में, टू लेट यू नो अबाउट द डोमिनार 250। सो इन फ्रंट ऑफ मी इज़ द न्यू डोमिनार 250। इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स अबाउट द डोमिनार 250, आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। सो फर्स्ट जस्ट लुक एट द बाइक। आई विल गिव यू अ वॉक अराउंड ऑफ द बाइक टू नो हाउ द बाइक लुक्स। सो लेट्स स्टार्ट। Engine you are seeing here is the 248.77 cc DOHC single cylinder liquid cooled 4 valves fuel injection engine. So this engine make 25.6 PS of power at 8250 rpm and 23 Newton meter of torque at 6250 rpm. So they have taken some cues from its elder brother, the Dominar 400. So the fuel economy, the fueling, the ride quality has been improved of this bike. As you can see, this is the double barrel exhaust. I think it's completely looked like the Dominar 400. Other than the displacement is the only thing that has been low on this bike. Other than that, everything is taken out from the Dominar 400. It's kind of looks similar to the Ducati Diavel, the smaller version of Ducati Diavel. So these are your pillion seat. This is the passenger seat. It is the fueling the tank of the bike. This is the instrument cluster. As you can see. So in this instrument cluster, this is your kilometer per hour. आप कितनी स्पीड पर चला रहे हो। ये साइड में जो ब्लिंक कर रहा है दैट इज़ योर फ्यूलिंग। आपको बाइक में फ्यूल कैपेसिटी कितना है। इधर आपका टाइम आ गया, ये आपका ओडो आ गया, कितने किलोमीटर आप चलाओगे। दिस इज़ योर RPM, दिस इज़ योर इग्निशन की। सो बाइक में थोड़ा बहुत ट्विक्स किया गया है। एज यू नो, ड्यूक 200 में, NS 200 में ये मतलब ये जो LED आते हैं उसके साथ। दिस इज़ योर किल स्विच। ये आपका हो गया हैज़र्ड लाइट, ऑन ऑफ कर सकते हो आप। दिस इज़ योर स्टार्टर बटन। सो दिस इज़ योर हेड बीम, हाई बीम और लो बीम के लिए ये इंडिकेटर आ गया। एंड दिस इज़ योर हॉर्न। सो इधर आपको देखने को मिलेगा द लोगो ऑफ बजाज। आपका बैटरी का टेम्परेचर कितना है, बैटरी में चार्ज है या नहीं। या यहाँ पे आपको साइड स्टैंड दिखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा है साइड स्टैंड। सो दिस इज़ द ABS वेरिएंट, तो यहाँ पर ABS भी लिखा है। और यहाँ आपका रहा इंजन टेम्परेचर सेंसर। इंजन में कितना टेम्परेचर है आप से देख सकते हो।
सो एज फॉर द टैंक कैपेसिटी, बाइक का जो टैंक कैपेसिटी वो 13.5 लीटर्स है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बाइक. सो मूविंग ऑन टू द हेडलाइट्स. So the headlights you are seeing here, these are DRLs, daytime running lights with AHO, automatic headlamps on, अगर आप जानते हो तो उसे. So as you can see, ये रहा आपका पास बटन. So this headlight, the lamps provide better visibility in the daytime, in the night time as well. So visibility के हिसाब से these are very, I think the quality of this lighting is very good. So moving on to the brakes. The brakes you are seeing here is your 300 mm dia disc from Vibray. Radial mounted calipers के साथ आते हैं ये 300 mm disc brake है आपके. So these brakes are both comes with dual channel ABS के साथ आता है ये. Now moving on to the rear brake. आपका रियर में जो ब्रेक आता है दैट इज़ योर 230 mm DR डिस्क. सो ये 230 mm के साथ आते हैं. बोथ फ्रंट एंड रियर कम्स विद डुअल चैनल ABS. ये सिंगल फ्लोटिंग पिस्टन कैलिपर्स है. सो इट इज़ योर रियर टेल लैम्प. नाउ मूविंग ऑन टू द फोक्स. सो एज यू कैन सी these forks are 37 mm inverted forks. So they provide better suspension setup, rebound setup. The front one is unadjustable, आप इसे adjust नहीं कर सकते. So as for the rear one, it is your gas charged nitrox monoshock with multi-step adjustability. आप इसे अपने हिसाब से adjust कर सकते हो. If you want to little bit soft or little bit hard, you can do it right here. The rear tire is 130 mm with 70 width and 17-inch rim. The front one is your 110 by 80 with 17-inch rim. तो बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है that is your 1.60 lakh और एक्स शोरूम हैदराबाद. I think on road this is going to cost you around 1,90,000 sorry in Hyderabad. So as you can see, this is the bike. So tell me, what are your opinions about the Dominar 250? Is it a good bike or not? Please comment down below. But what I've got to know is it is a very good bike. I mean, if you want to take it off-road, if you want to commute daily, so अगर long journey पे आप जाना चाहते हो, so this is the bike for you. If you want to choose between KTM Duke 250 or this one, if you want to beat up power, performance, you should go for Duke 250. Or if you want to ride it daily, if you want to take it for a long spin, you can go for it. This is the bike for you. The Duke 250 going to cost you a little bit more than this, but both the bikes are different, the setups are different. Although the engine is very, refined in here. So this bike available in two color scheme. One is your Canyon Red, as you can see right here. So this bike does come in matte black edition. One is your Canyon Red, one is your matte black. So it's not complete your glossy black, as you can see is matte black. So everything in this bike, the features are everything are the same, just the colors difference. As you can see, this is your matte black edition. Exhaust note, how the bike sounds, so let's check it. So it's on. So everything is on.
So if you want to know about this bike more, please contact Bajaj showroom Kondapur. So they will give you a complete details, the specifications, the test ride availability or not. आप इसे टेस्ट राइड कर सकते हो या नहीं. So if you want to know more about this bike, I'll give the number, I'll put the link in the description, so you can call him, you can call them and ask them what the price is, what the specifications, what is the ex-showroom price, what is the on-road price. You can directly ask them, they will tell everything about this. So if you like this video, please give it up a like, thumbs up, share it with your friends, subscribe to my channel, hit the bell icon there so you will get notified whenever I upload the next video. So tell me in the comments below, how do you like the new Dominar 250? Is it good bikes? What are your thoughts about this bike? Please let me know down in the comments. So until then, tata, bye bye, see ya, take care. We'll meet in the next video.